Assalamu alaikum students, this is me Mahnoor Afzal and I'm teaching you English textbook of grade 5. In this video we will do the exercise of unit number 13 and its title is When Something Went Wrong. So without any wasting a time, let's take a start. Okay, first is oral communication, learning the sounds. Read the given sentences and notice the use of intonation. So, first of all, you should know what is intonation mean. Intonation is the rise and fall of the voice in speaking. Intonation is about how we say rather than what we say. There are two types of intonation, rising and falling intonation. बचो इंटोनेशन आवी कना चे कला मु खबर कहू नो नीम वर्ड्स बने मु डिस्ट्रेस कहू कना नीम वर्ड्स बने मु न कहू नीम वर्ड्स बने मु से आवाज लगाने तेज को नीम बने रोकू नो ये इंटोनेशन दा मतलब न चे मु खबर कहू दे मतलब दादा चे मु खबर चंगी कहू कुमे तरीके की कहू महे की कुम वर्ड्स बने राइज कहू कुम वर्ड्स बने मु फॉल कहू नो दजी की मुसरा दुआ टाइप्स दी राइजिंग एंड फॉलिंग इंटोनेशन. Rising intonation, our voice rises at the end of a statement. Us damusara statement da this scene is beautiful, isn't it? No desi ke this scene da bani stress da desi ki mola आवाज चुवी kana high shi this scene is beautiful, isn't it? Your statement की मुझे से कि rising intonation की you mu yes no questions की. Do you sell clothes? Are you hungry? Okay, now is falling intonation. In falling intonation, our voice fall on the final stress syllable of a phrase or a group of words. For example, where is the nearest bank? Where is the nearest bank? So here our voice is fall. In WH questions, what is your name? In commands, do not run on roads. In exclamations, that's great. नो बच्चों फॉलोइंग इंटोनेशन की चीज़ें भी चिकला वर्ड्स वाला ला अटोलना एंड वाला स्ट्रेस सेलेबल भी करना आगे बने मुँह वाला वॉइस ची भी करना आदे से फॉल शी ओ तो होगी जैसे कि मुँह डिंग नहीं आयु या मुँह स्ट्रेस ना मेरे को मुँह अनस मखा मेरे को स्ट्रेस मुँह ना मेरे को करना जैसे कि मुँह रो वानी बस आयु उस जैसे कि ना मुँह सरा दा वेयर इज़ दी नियरेस्ट बैंक व्हाट इज़ योर नेम डू नॉट रन ऑन रोड्स उस दजी की मु स्ट्रेस दो बने मेरे को दो बने एंड के होना मेरे को उन्होंने दजी की मोला आवाज़ शिवी करना आप फॉल कीगी दैट्स ग्रेट दजी की मोला आवाज़ फॉल कीगी और जो राइजिंग इंटोनेशन के दा आगे बने मु स्ट्रेस मेरे को द स्टार्ट वाले जो कुम वर्ड्स थी. Okay, next is learning to speak. Read and practice the given dialogue with proper intonation. Hafsa, teacher, could I go home early today? Miss Sarah, but why do you want to go home early? Are you feeling alright? Hafsa, yes, I'm fine. My grandfather is in hospital. I want to go and give him a bucket. Miss Sarah, oh, that's really sad. You can go after break time, but don't forget your leave application. Hafsa, thank you, teacher. No, बच्चों दा मुसरा डायलॉग ता हफ्सा और अगे वाले चुकुमा टीचर दा अहो मांस के कन्वर्सेशन दा टिक दा न दजी की दो खबर कई जे हफ्सा टीचर ते जे जनान स्कूल की कना ये जे जनान कोर त जर्सम मिसार वती जे विलेजर से ताल तबीयत टिकता ते जे हा मा तबीयत हो टिकता हो माल ग्रैंड फादर मतलब माला दादा चुकुम दा हॉस्पिटल के दा और जत्सम अगसर मिलविदन होता टिक दा नो मिसार वती जे हा दा खोडेर मगा खबर दा कना ज खपाश मंची ताल अखपा ग्रैंडफादर हॉस्पिटल के दा नो ये खत ब्रेक टाइम लाड़ शे हो लीव एप्लीकेशन उली के टिकना नो बे हफ्सती चे थैंक यू टीचर नो दा तसु जे रीड कवई नो प्रॉपर इंटोनेशन सरब तसु रीड कवई. Practice the dialogue given above but about how to take leave for different reasons by using polite words. So I tell you the dialogue between Ali and his teacher. So listen carefully. Ali, teacher, could I go home early today? Miss, but why do you go home early? Are you feeling alright? Ali, no, I'm not feeling well. I'm feeling headache and fever. Miss, oh, that is really sad. You can go. Ali, thank you, teacher. No, बच्चों दाम यो डायलॉग को अली और रखे वाला टीचर मांस के चिशी बरे के जगह तबीयत टिकना दा नो आई जिस बनन कोर तजर्ट सम
no be our teacher na pohtano ki teacher permission wir ki no dekim na gora polite words use kari di thank you share the really or does he can nor feeling all right no the polite words use share vi ठीक ना. Let's move forward. Okay, next is reading and critical thinking. Reading comprehension. Answer these questions. What was wrong with the parcel? What type of stories does Hafsa like to read? Which stories book do you like? Why? So I will tell you the answer and please note down in your notebook. First is what was wrong with the parcel? Answer is the books is in the parcel. The books in the parcel were not story books. What type of stories does Hafsa like to read? Hafsa likes to read adventurous stories. Which story books do you like? Why? I like to read fairy tales because it filled with imagination, with fantasy, and with fictional characters. That's why I like fairy tales. And you can also say that I like horror stories because of the suspense, because of the horrible features, because of the old houses. I like to read or I like to watch that type of stories. So it's this question is depend on your opinion that you what you like to see or to watch or to read story books. Okay, next is read the lesson again and fill in the blanks with the correct options. Hafsa was anxiously waiting for her dash. Food, storybooks, dress, flowers. Right answer is storybooks. Doorbell is an example of a dash noun. Compound noun, abstract noun, proper noun, collective noun. Answer is compound because it is made up of two words doorbell. Doorbell. Hafsa's mother wrote a dash letter to the company. Invitation, complaint, greetings, thank you. Right answer is complaint letter. Her dash ordered storybooks for Hafsa. Father, mother, friend, cousin. Right answer is mother. Okay, next is analytical reading. Read a formal and an informal letter from the internet or a children's magazine. Note its important features and differences in your notebook. बच्चों दा मुझे एनालिटिकल रीडिंग ने चिकुम की मुमू इंटरनेट या चिल्ड्रन वाले मैगजीन्स कुम बुक्स भी अवो नमू फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर बुरीट को चाट संगी और अगे वाले इंपॉर्टेंट फीचर्स कुम दी और फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के च डिफरेंस था आबो मुख्बल नोटबुक की लिखू नेक्स्ट स्लाइड के बुझे तस्ता हाँ एम आबो तसो खपल नोटबुक की नोट की. Okay, these are the features of formal letter and features of informal letter. First is writer's address, recipient address, date, subject, salutation, body, and then signatures. And next is features of informal letter: address and date, salutation, body, and complimentary clause. These are the features of formal and informal letter. Okay, so this is the difference between formal and informal letter. Formal letter. A formal letter is usually written for official reasons. A formal letter is also known as a business letter and it is written in a formal language with a specific structure and layout. It is written to make an inquiry, request something, complaint, and apply for a job, etc. But जो formal letter चीज़ आ letter ची कुम्मू business के कुम्मू offices के डीरियूस को मतलब आ business purpose दे पारा आ letter ची employee boss तली की या boss employees तली की या जैसे बल्क कंपनी वाला ऑफिसर तली की नो जैसे कि फॉर्मल लेटर भी अगो प्रॉपर स्ट्रक्चर भी प्रॉपर लैंग्वेज भी अगे मुताबिक अगो लेटर लिखी आज चीशी पर्पस दे पारा लिखे शी इंक्वायरी कवनो दे पारा चीशी दे पारा रिक्वेस्ट कवनो दे पारा या चीशी खिलाफ कंप्लेन कव या जॉब दे पारा जो अप्लाई कवनो आगे दे पारा मु फॉर्मल लेटर लिखू जो कुम यो ऑफिशियल इंग्लिश लैंग्वेज के लिखे शी और कुम वाला स्पेसिफिक स्ट्रक्चर भी मगर स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग बुतसो अ लेटर लिखई नो अमु सिर्फ फॉर्मल लेटर दा
Informal letter. An informal letter is a personal letter. You want to ask for something or communicate with a friend far away. An informal letter is written to friends and family. और इनफॉर्मल लेटर के कत मिक्स लैंग्वेज यूज़ के कत स्लैंग वर्ड्स यूज़ के कता वाला वोकेबलरी टिक नमी ता वाला ता प्रॉपर स्ट्रक्चर नवी यूज़ करें नो आप स फ़र्क न प्रवेजिएगा कि आ इनफॉर्मली तक पल फ्रेंड्स पल रिलेटिव्स पल फैमिली मेम्बर्स दे पारा ली के रिक्वेस्ट कवानो दे पारा या कम्युनिकेशन दे पारा मुझे ईद के अख्तर के पल फ्रेंड्स चिकुम लरे लरे पति की ये वो तो मु लेटर्स लिखू ना मुसरा इनफॉर्मल लेटर करे सी और इधर मु पर्सनल लेटर विल शू और फॉर्मल लेटर वाला सेकंड नेम से दा बिजनेस लेटर और इनफॉर्मल लेटर वाला सेकंड नेम दा पर्सनल लेटर. Okay, next is language focus, vocabulary building. Read the given words with their meanings. Console, to comfort someone. Adventurous, willing to try something daring. Parcel, a package wrapped for shipment. Anxiously, in a worried or nervous manner. Disappoint, to make somebody feel sad. Expect, to predict or believe that something will happen. बच्चों कंसोल मतलब तो चो काम डाउन के चो रिलैक्स के कंफर्ट विद प्रोवाइड के अगदई कंसोल एडवेंचरस खतरनाक रिस्की करू न कवन होता एडवेंचरस यही पार्सल चिकुम पैकेज भी चिकुम जैसे बॉक्स होनी भी है कि कुम प्रोडक्ट रखते भी या चीशम पड़ते भी अगर तमु पार्सल यायु एंशियसली मतलब तो डेर नर्वस मैनर वे कंफ्यूज्ड वे खफा वे नो अगे के मैं एंशियसली गती डिसअपॉइंट मगा सैड फीलिंग सैड द पारा यूज़ कवेशु और एक्सपेक्ट मतलब तो चाना द एक्सपेक्ट का या तो चीज़ द एक्सपेक्ट का जो सबई बुदसी की गई सबई बुज़ सम शॉपिंग था या बुज़ जैसे ट्रैवलिंग काम या जैसे आगादा उस जिक्री करी दी करना चाहिए टू प्रेडिक्ट और बिलीव दैट समथिंग विल हैपन मतलब तो प्रेडिक्शन कहता था 100% श्योर नहीं जिदा कार बदसी की खो बस तो प्रेडिक्शन वके जिस सबई तब बदसी की या दिन बाद बदसी की या सबई तबो बारान की जैसे कि मु प्रेडिक्शन लगो. Okay, next is regular and irregular plural nouns. Read the given rules for regular and irregular plural nouns. बच्चों तो बताइए रेगुलर और इरेगुलर चीज़ भी का नाम रेगुलर मतलब च प्रॉपर तरीके सरा यो नाउन न प्रोनाउन जुड़शी संगे जगसरा मु एस या ई एस ऐड को हो इरेगुलर आवी कना जगसरा एस या ई एस न ऐड कीगी आ बस अगला कुम च खपल स्पेलिंग भी वर्ड वाला की चेंजेस राशि नो अगला प्रोनाउन जुड़शी और कला कला दसिम केस रोजी च मगा स्पेलिंग प्लूरल नाउन की मगसी की यूज़ की गया की चेंजेस बिल्कुल रानशी दसे कि जी कुम गाबी कना वर्ड्स भी नाउन्स भी कुम वाला सिंगुलर और प्लूरल वाला गा सेम भी स्पेलिंग सेम भी नो अगर तबे मु इरेगुलर यायु नो तो तब दजी के उस पता लगी. Add s to the most of the nouns. Book, parcel, these two words are noun but when we change it to plural nouns we will add s to it and books, parcels. Add es to the nouns ending in s, sh, ch, x or z. Inch, box. Inches, boxes. बच्चों दे की दाई करना चुकुम वर्ड्स एस बनी एस एच बनी सी एच एक्स और जी बनी एंड की करना अहो सरबमु ई एस लगाऊ चा कलमु अगना प्लूरल नाउन जुड़ाऊ जैसे कि दागरा सी एच बने एंड द उदा एक्स बने एंड द नो जका दो न बाद ई एस लगी दली दी inches, boxes. Do wala plural jod show. Add s to the most of the nouns that end in o. Radio, video. Radios, videos. This is singular noun chukum o bane end kigi ago sarabumu s lago. Add es to a few nouns that end in o. Tomato, hero. Tomatoes, heroes. Change y to I and add es to the most noun ending in y. City, cities. ये चुकुम वर्ड्स ची वाई मैंने एंड की कना आबू मुस्किप को अगेब सार बमू आई ई एस वालगो ठीक दा मतलब वाई बो आई सरा चेंची वाई बमू लरी को वाई पुसार जैसे के आई डालो और मख की बमू सरा ई एस ऐड को इफ अ वोवल कम बिफोर वाई ऐड एस बॉय डे बॉयज डेज उसदा मुसरा वोवल दा कना ओ उदा वाई ना पहला रगला दा दोड़ वर्ड्स के दागुरा वाई ना पहला ए मुसरा वोवल दा और ओ मुसरा वोवल दा उदा वाई ना पहले रगली जका दूसरा बमू एस लगो
Change F to V and add ES to most nouns that end in F or FE. Leaf, wolf, leaves, wolves. Desse words चिकुम F मैंने end की नो F पमु V के convert को और आगे मख्तबमु ES वाला गौ. Sange da F ta leaf वाला नो da F पुसार मु V वाला वालो और आगे नमक की ES नो leaves show. जैसे कि wolf वाला F लरी show V वाला की दो आगे नमक की ES wolves. Add S to a few nouns that end in F or FE. Roof, cuff, roofs, cuffs. Plural forms of some nouns are irregular. Man, tooth, man, teeth. और जैसे कि दा मुसरा regular nouns दिखना नो दा वाले चकला मु plural जुड़ाऊ नो मुसरा irregular रजी उस ए पसार ई रालो और ओ पसार ई रालू नो मैन और टीथ उस दजी के सर मुना एस लगा वाला एंड के नाम हुई सर ई एस एंड के लगा वाले खुदा पल स्पेलिंग के चेंज रालो नो जका देता मु irregular nouns यायू. Both singular and plural are same. Sheep, deer. Sheep, deer. Os to se dole singular form to gre to se dole plural form to gre na da same di. Desi ke s ya es na radsi vele che bas da fact ta che sheep or deer wala pluralum sheep or deer bi. Change on to a. Phenomenon, criterion. Phenomena, criteria. दादा वाला प्लूरल नाउंस दी न जिकल मु प्लूरल्स त कन्वर्ट को नो ओ एन बुमु ए के कन्वर्ट को फिनोमिनन वाला ओ एन ए के कन्वर्ट शो और क्राइटेरियन वाला ओ एन क्राइटेरिया के कन्वर्ट शो ए के. राइट द प्लूरल्स ऑफ द गिवन नाउंस बिलो. हेयर its plural is hairs HAIRS. Fly its plural is flies FLIES. Tooth its plural is TEETH teeth. Letter its plural is letters LETTERS. Bench benches BENCHES. Knife knives KNIVES knives. Book books BOOKS. Potato potatoes POTATOES potatoes. Okay, next is regular and irregular verb forms. Read the given regular forms of verbs. A verb can be regular or irregular. Regular verbs form their past and past participle forms by adding ed. Irregular verbs do not form their past and past participle forms by adding ed to them. बच्चों दादे की दा यही करना चाहिए वर्ब चिकुम्बी आम मुसर रेगुलर और इरेगुलर खबर की मतलब मु पहला टोल नाउन बरे के वेलो कना उस मुदजी के वर्ब बरे के उचे वर्ब मुसरा रेगुलर और इरेगुलर की देशी रेगुलर चंगी भी चिकला वर्ड वाला चिकुम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कना आहा ईडी दी वजना चेंजी मतलब एक्सेप्ट के कमु ईडी वाचे उन वाला पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल जोड़शी दसे वर्ड्स चिकुम ईडी न एक्सेप्ट कई जान सरा मतलब दजी की मु ईडी न शु लगवाए आगे तमु इरेगुलर वर्ब्स यायु और दजी की दाचे मुसर दी दाटो मुसरा रेगुलर वर्ब्स दी वेले चिदा चिकल मु द वाला बेस फॉर्म सरा ईडी वाला गउनु आमुसरा एग्जैक्ट पास्ट फॉर्म और वाला पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म चिकुम भी कना आ जुड़ेगी. फर्स्ट इज एक्सेप्ट accepted accepted. Change changed changed. Remember remembered remembered. Pack packed packed. Listen listened listen. So these are regular verbs and these are irregular form of verbs. Arise arose arisen. Beat beat beaten. Choose choose chosen. Fly flew flown. Go went gone. बच्चों तो कहते हैं शियो गुरे चिदा बेस फॉर्म के चिकल मु पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल के चेंज को उन दजी के ईडी न दले दले अराइज वाला सेकंड फॉर्म अरोज शो और बेमा वाला अराइजन शो थर्ड फॉर्म ठीक ना. बीट बीट बीटन चूज चूज चूजन फ्लीव फ्लाउन वेंट गॉन दा बिल्कुल दो वाला बेस फॉर्म ने चेंज रची वेले दो वाला स्पेलिंग के चेंज रखले दो वाला एंड की ईडी नश्ता जका दिता irregular form of verb यही. Write 3 examples of regular and irregular verbs in your notebook. So I will tell you and you note down in your notebook. First is regular form of verbs. Jump jumped jumped. Play played played. Wash washed washed. Now irregular form of verb.
break, broke, broken, bring, brought, brought, build, built, built. So these are irregular and regular form of verbs. Okay, next is learning to spell. Fill in the missing letters to complete the words. Now we will complete these missing letters. Unfortunately, Unfortunately, unfortunately. Excitedly, Excitedly, excitedly. Anxiously, Anxiously, anxiously. Adventurous, Adventurous, adventurous. Expect, expect. Disappointed, disappointed, disappointed. Okay, next is grammar. Simple past tense. Read the given sentences and notice the structure of the simple past tense. The simple past tense express an action that happened in the past time. बच्चों सिंपल पास्ट टेंस कुम भी आ टेंस चिकुम मुद्दा पास्ट वाला एक्शन बरे के हई आ मुसरा सिंपल पास्ट टेंस हुई मतलब उस नन रेजदा न तार ताला yesterday ता कुम कार करे कुम एक्शंस परफॉर्म करी उन आ सिंपल पास्ट टेंस करे सी तब एग्जांपल्स ना पता हो लागी Hafsa got her parcel. Hafsa did not get her parcel. Did Hafsa get her parcel? नो बच्चों दा मुसरा सिंपल पास्ट था और सिंपल पास्ट के वर्ब वाला हमेशा सेकंड फॉर्म लागी गेट गॉट गॉटन नो हफ्सा गॉट हर पार्सल नो दा मुसरा अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस था नो दा चकल मु नेगेटिव और इंट्रोगेटिव के चेंज कहू नो मु बे डिड नॉट लगाऊ हफ्सा डिड नॉट बेबो वर्ब सरा फर्स्ट फॉर्म लागी गेट हर पार्सल सिंपल सेंटेंसेस के बो सिंपल पास्ट टेंस के बो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के वर्ब वाला सेकंड फॉर्म लागी हो चिकला आमु नेगेटिव या इंट्रोगेटिव के चेंज को नो बेबो पास्ट वाला फर्स्ट फॉर्म लागी डिड नॉट गेट हर पार्सल और जो इंट्रोगेटिव राशि नो डिड वो सेंटेंस वाला स्टार्ट के राशि डिड हफ्सा गेट हर पार्सल एंड देन क्वेश्चन मार्क. So now we will study the structure of affirmative, negative and interrogative sentence. Okay, this is the structure of simple past tense. In affirmative or in a positive sentence, first we will add subject, then verb with past form, then subject. In negative sentence, subject, did not, then verb, then object. In interrogative, did plus subject plus verb base form plus object. Like Hafsa got her parcel. Parcel is object, got verb, and Hafsa is subject. Hafsa did not get her parcel. Did Hafsa get her parcel? Okay, next is past continuous tense. Read the given sentences and notice the structure of the past continuous tense. The past continuous tense expresses action or events that were in progress at a particular time in the past. बच्चों मु पहला सिंपल पास्ट हो उसमें मु पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आयु पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कना चिता वाला पास्ट के कुम एक्शन या इवेंट चिवी आ चंगे प्रोग्रेस कवलो चंगे यो टाइम के एक्शन परफॉर्म की दो आगे बरे की मुतखई नो सेंटेंसेस के बता सोस द वाला स्ट्रक्चर में नोट कई ओ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस संगी भी आगा Hafsa was reading her storybook. Hafsa was not reading her storybook. Was Hafsa reading her storybook? बच्चों पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मूव वाज वर्ड लगो ठीक दा वर्ब वाला दा फॉर्म लाएगी वाज और वर एक्सिलरी वर्ब्स चुकुम भी वाज सिंगुलर नाउन सर लाएगी और वर च भी अ प्लूरल नाउन सर लाएगी और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हमेशा वर्ब सरा एंड के आईएनजी लाएगी न तो के पता लग दली दे वाला सेंटेंसेस सेम पास्ट होने दा सिंपल पास्ट होने को दे के वॉज वर प्लस आईएनजी वाला एडिशन उशी सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस आईएनजी वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट
In negative sentence, subject plus was verb plus not plus ing verb form plus object. Interrogative, was verb plus subject plus ing verb form plus object. तसं द स्ट्रक्चर द सेंटेंसेस सर रिलेट कहीं होता सब द स्ट्रक्चर वाला समझ राशि. फॉर एग्जांपल अफर्मेटिव सेंटेंस के हफ्सा मुसरा सब्जेक्ट था जैसे कि मुसरा वाज रालो विले हफ्सा सिंगुलर पर्सन दानो सिंगुलर सर हमेशा वाज लागी हफ्सा वाज प्लस ing or verb form मुझे वाला read और विसरा ing no plus दा वाला example da her story book musara object show. Then next negative के subject hafsa was not ing verb form reading her story book object. And then in interrogative was subject is hafsa ing verb form reading her storybook is object. Make 3 sentences of your own using each of the tenses mentioned above in your notebook. So student, I will tell you first about the sentences of simple past tense and then past continuous tense. Okay, so first sentence of simple past tense is Aslam won the match. He did not work hard. Did we visit Kalam Valley? Question mark. Now sentences of past continuous tense. Najma was washing clothes. Ali was not making cards. Are they were learning their lesson? Question mark. Okay, next is transitional devices. Words that link two parts of a sentence are called transitional devices. We can link two parts of a sentence using for example and for instance. बच्चों ट्रांसलेशनल डिवाइसेस कुम ते चिकला सेंटेंस वाला मुद्वा पार्ट्स कनेक्ट को और अगर कनेक्शन के मुँह च वर्ड्स यूज को मको वर्ड्स ते च ट्रांसलेशनल डिवाइसेस चंगे फॉर एग्जांपल शो फॉर इंस्टेंस शो दम ते एग्जांपल्स रकड़ी. I like to eat healthy fruits and vegetables, for example, apples, bananas and spinach. उस दा मुसरा सेंटेंस वाला यो पार्ट था और दा मुसरा सेंटेंस वाला यो पार्ट था नो दाद बड़ा पार्ट से खपला के कनेक्ट कवनो दे पारा फॉर एग्जांपल यूज करे द फॉर एग्जांपल चिकु मुसरा दा मुसरा ट्रांजिशनल डिवाइस था. I know some of the collective nouns, for instance, team, class, flock and army. Da musara dva parts the sentence ara do join kavano de para da words you shave for instance no da musara chi da kum pink color sara highlight shave da musara transitional devices di. Now we will do the exercise of this activity. Write 2 sentences of your own using for example and for instance each. So first sentence is I bought stationery, for example, pen, marker, papers and pencil. Okay, next sentence is I saw many animals in the zoo. For instance, lion, elephant, deer, giraffe and monkey. Okay, next is types of sentences. There are different types of sentences. Okay, a sentence that expresses a request or command is called an imperative sentence or command. An instructional sentence gives advice or instruction. It ends with a full stop. An exclamatory sentence expresses a sudden emotions or feelings. It ends with an exclamation mark. बच्चों मुसरा sentence वाला द्रे types हुई. You we imperative or command sentences, you instructional sentence, you exclamatory sentence. Imperative और command किसे भी चिता चाहता है request का या command मतलब order विर का है. नो हम मुसरा imperative sentence कर सी. Instruction तो चाहता है advice विर का या instructions विर का या information विर का है अगर ता instructional sentence है. और exclamatory तो चाह वाला sudden feelings या actions खाए emotions खाए ना अगर तो मु exclamatory sentence और हमेशा end की exclamation mark सरा end की गी. Okay, command sentences or imperative sentences. Read the given command sentences. Show me your notebook. Go and brush your teeth. Open the door. So these are sentences of command and imperative sentence. Instructional sentence. Take me to the market. Add 2 teaspoons of sugar. Turn to the left. Exclamatory sentence. Our team won the match. Ouch, my leg is bleeding. Wow, you are looking pretty. So these sentences are end with exclamation mark.
Okay, now we will do the exercise of the types of sentences. Write 3 sentences of each kind discussed above in your notebook. First is command or imperative sentences. So, first sentence is clean your room. Second sentence is pass the salt. Third is be quiet. Next is instructional sentences. First sentence is do not take shortcuts. Say one thing in each sentence. Arrange your things. Next is exclamatory sentences. First sentence is how beautiful the city is! Exclamation mark. Second is what an idea! Exclamation mark. You did a great job! Exclamation mark. Okay, next is writing, learning to write. Read the given letter and notice its features. So this is a letter and we will note the features of this formal letter. Okay, first is writer address. House Hafsa, house number 271, sector B, Faisalabad. Receiver address to whom the writer is written a letter. XYZ Authority, Faisalabad, October 15, 2018. Subject is rainwater drainage and respected sir salutation. And this is the body of the letter. I am writing this letter to inform you about the issue of rainwater drainage. Every year in the monsoon season, our neighborhood is flooded with rainwater as the drainage system collapses. We have requested the area committee many times, but the situation remains the same. Our lives have become difficult and there is the real danger of disease outbreak in our neighborhood. Please resolve the issue on priority basis. Yours sincerely, Hafsa. This is a writer name. And this is a complimentary clause. So we can see that these are the features of a formal letter. बच्चों दा अगर लेटर दा फॉर्मल लेटर अगला मुदा फीचर्स वकतु और दा मुसरा यो लेटर दा चकुम में यो अगतली कला दा यो अथॉरिटी तली कला दा वला नमाज जिकन दा मेंशन चिशी बरे के रेन वाटर ड्रेनेज बरे के नो गई ते विली दी चीज़ जिके बारान की ही मानसून सीजन के नो ड्रेनेज सिस्टम अटोल ख़राब दा गिद वजह नो बुजम की ही नो मुता खतरा दा चीज़ ने बीमारी होने लगी तो सो प्लीज़ मुझे पारा हेल्प हो कई और दा वाला दा सिस्टम बिल्कुल ठीक कई. Okay, next is creative writing. Write a letter to the editor of any children's magazines about pollution in your area. So students, in next slide I will show you the letter. Okay students, this is a letter. First is writer address, Fatma West House 55 sector A, Lahore, and receiver address TBW Children Magazine, Lahore. Then date June 26, 2022. Subject pollution. Then salutation, respected sir. And then body. I am writing this letter to inform you about the issue of pollution in our area. Heaps of garbage are in our streets. As a result, people are suffering from diseases. The number of flies and mosquitoes have increased. We have complained to area committee many times, but the situation remains the same. It is a danger to health. Please consider this issue, giving it a highest priority. Yours sincerely, Fatma OS. This is complimentary clause and then sign or signature. बच्चों मुझे ज़िक्र दाव का तो जिना मुसार writer address the receiver the bed date mention the subject the best salutations the best मुसार body the or then complimentary clause or name sign वगैरह etc. दा मुसारा यो formal letter वाला अगादा structure दा ओदे की proper language शवे दा ओदा चिशी letter दा यो complaint letter दा about pollution. फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल तमाम तलबा और तालिबात के लिए खुशखबरी. जदीद साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से क्लास अव्वल ता दहम ये तालीमी बोर्ड तैयार किया गया है जिससे आप मैट्रिक तक का इम्तिहान बगैर किसी ट्यूशन पास कर सकते हैं. मजीद KPK का निसाब भी मौजूद है. हमारी तमाम वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं. किसी किस्म की कोई फीस नहीं चार्ज की जाती. आप हमारे जूम प्रोग्राम में भी दाखिला ले सकते हैं. फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल. इसको इस तरह पढ़ना है कि अभी तक हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि 1/2 क्या होता है. एज फॉलोज. एक जनरल इक्वेशन हमें बताई गई है फोटोसिंथेसिस की, हम लोग उसको देख लेते हैं. यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे पास ना इसका, तो फिर ये बन जाता है
ये है सर्कल ही, ठीक है। अगर हम जोड़ देंगे तो ये सर्कल हो जाएगा, लेकिन अभी ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ हीट उस हीट पर कम तरीक़ो ट्रांसफ़र की हर तरीक़े मंगवायो थर्मल जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, यहाँ पर मेन काम होता है कि पानी को अब्जॉर्प्शन का, यानी कि उसकी कंजर्वेशन का मेन काम कहाँ पर होता है? ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यानी वुमेन